Hello guys, so today we are going to discuss about the insulin therapy and why it is important. I'll tell you. इंसुलिन थेरेपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हम इसको बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि the basics are taught in every book, but we don't know the dose. We don't know when to give it, how much to give it. We all know the side effects. We all know the mechanism of action, but when we have to prescribe it, we all are confused. And reason for confusion is हमें पढ़ाया नहीं गया कभी. So today I'm going to discuss the insulin therapy, how to infuse it, how to give it in a very simple way. I'm not going to waste a lot of time on history chemistry that you can read. Basic will be how it evolved a little, what are the regimens, what is the dose, and what is the newer ways of giving the same kind of insulin. And this is a question which is being asked since the undergraduate level until the super specialty level. So I'll try to make it a little simple for everyone. I know it's tough, and bear with me. So let's start. My name is Dr. Shubham Agarwal, as you have already read, and I have recently passed my DNB internal medicine. So I hope this video helps. Let's go. So first of all, we all know in 1922, Benting and Best discovered insulin, and it was such a breakthrough in the history of mankind. And since then, it evolved. And since 1922, recombinant was found in 1980, and then now, what is new for us is that now the once weekly dose of insulin is coming up. Oral insulin is coming up, liver preferential insulins are coming up, glucose dependent insulin and beta cell replacement methods are coming up. So how are they going to help us? They are going to create a history by reducing the pain which a patient usually suffers. Okay, we are here to reduce the pain. So let's see the next topic. So here what we can find is कि हम सबको पता है इंसुलिन कब देते हैं, टाइप 1 डायबिटीज में देते हैं, टाइप 2 में देते हैं, टाइप 2 में कब देते हैं, टाइप 2 में हम तब देते हैं जब पेशेंट का OHA फेलियर हो गया. नाउ व्हाट इज दिस OHA फेलियर? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट फेलियर व्हेन patient is put on 3 oral hypoglycemic drugs with the maximum tolerated dose. Since the HbA1c is more than 7.5, there we have to shift the patient to the insulin. Then we all know in DKA and in HHS, in latent autoimmune diabetes of adults, diabetes secondary to pancreatitis. Add-ons, जहाँ surgery करनी है at the earliest and RBS is uncontrolled, we have to give it. Then in the patients of the pregnancy, it is a drug of choice. You do not give any other drug. Pregnancy है, diabetes है, insulin दोगे और कुछ नहीं देना है. There are a lot of blind ends speaking a lot of things, but what is safe is the insulin. वाइवा में आंसर क्या करना है? Insulin. और कुछ नहीं आंसर करना है. Don't go to the studies in the vivas. Then talking of the insulin regimen. So insulin regimen, we all know basal insulin, basal plus premixed insulin, and a basal bolus. We'll discuss this further. I'm not going to waste much of our time. So a short acting, we have lag, lisprispart, glulysin, inhaled Exfreza and Exubera, regular, which will start to act in 30 to 60 minutes और 2 से 4 घंटे में पीक आ जाएगा. Then we have NPH, 1 to 2 hours में काम करेगा, 1 to 2 hours में काम स्टार्ट करेगा, 4 to 8 hours तक जाएगा. बेस्ट वन इज ग्लाजिन बेसल इंसुलिन, 1 से 2 घंटे में काम होगा, पीकलेस इंसुलिन है, बेसल लेवल रहेगा, कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा. देयर इज वन मोर डेग्लूटेक जिसका 48 hours से 72 hours तक भी असर रहता है. दैट इज मच 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 मोर गुड. So then the further we have this all the Lispress part which are rapid, then we have a short acting, intermediate NPH, and then glargine. We all know that. Now I'm going to break it. So this is a normal insulin. ये बहुत important है हमें याद रखना. जब पेशेंट को समझाओ ना तो ये डायग्राम खोल लो अपने लैपटॉप पे. टेल द पेशेंट कि हम क्यों इतने सारे आपको इंसुलिन दे रहे हैं. एक हम आपको बेसल इंसुलिन दे रहे हैं जो आपको 24 आवर कंट्रोल रखेगा. फिर हम आपको बोलस वाला इंसुलिन दे रहे हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर आफ्टरनून एंड बिफोर नाइट टाइम. तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे इतने सारे इंसुलिन लेने हैं और क्यों मील से पहले लेने हैं. ठीक है. देन वी हैव अ इंसुलिन रेजिमेन. दिस इज वंस अ डेली रेजिमेन जिसमें आपने बिफोर ब्रेकफास्ट एक इंसुलिन डाल दिया. बट इससे क्या होगा कि सिर्फ इतना येलो लाइन दिख रही है. सो ही विल हैव अ कंट्रोल ओवर ओनली दिस येलो लाइन ओवर द 24 आवर्स. देयर विल बी नो इंसुलिन कवरेज. Then we have twice daily regimen.
जिसमें हमने एक इंसुलिन दे दिया बिफोर ब्रेकफास्ट, एक इंसुलिन दे दिया बिफोर डिनर। बट इससे क्या होगा, यू हैव टू मेंटेन a strict carbohydrate intake, otherwise patient will fall into hypoglycemia। और सेकंड रीजन क्या है, इससे काफी ज्यादा वेट गेन होता है, तो नॉट अ वेरी सक्सेसफुल रेजिमेंट। फिर हमारे बेसल बोलस रेजिमेंट है, जिसमें हमने बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर ऐड किया, और एक हमने बेसल लेवल ऐड कर दिया। एंड दिस इज वेरी गुड, बेस्ट वन, इट मिमिक्स द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। Then we can also give it along with the metformin, like हमने metformin before breakfast दिया, before dinner दिया, और उसके साथ हमने एक ग्लाजिन ऐड कर दिया 0.1 यूनिट पर केजी। अगेन हमने ग्लिमिप्राइड ऐड कर सकते हैं इन द सिमिलर वे। ओरल एजेंट एंड इंसुलिन, आई पर्सनली आई एम नॉट वेरी fond of this regimen. So there's a starting physiologic range जब हमने ग्लाजिन दिया at night 0.1 unit per kg and can be reached up to 0.4 unit per kg। बेसल लेवल कंट्रोल हो गया इससे। दिस इज हाउ वी स्टार्ट टू गिव द इंसुलिन। हमने सबसे पहले एक बेसल लेवल दिया, दिस इज फॉर द ओपीडी पेशेंट्स। हमने एक बेसल लेवल दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पेशेंट को एक रेगुलर इंसुलिन डाल दिया, कब, अगेन एट द नाइट एट 0.1 यूनिट पर केजी बिफोर द लार्जेस्ट मील। यूजुअली द नाइट वाला इज द लार्जेस्ट मील, तो हमने इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है। देन हमने इसको ब्रेकफास्ट वाले के बिफोर ब्रेकफास्ट ऐड कर दिया रेगुलर इंसुलिन को, और यहाँ पे हमने बिफोर लंच वाले मील से हमने उसको ऐड कर दिया। Then this is a physiological insulin, regular before breakfast, before lunch and before dinner, और एक हमने ग्लाजीन ऐड कर दिया, ठीक है। So now this is a diabetic logbook. We have to maintain BBF, BEF, BBL, DEL, BSF and BAF. So this is how you maintain a diet chart. You should stick it to the patient's counter. Even if in the government college, you can write it down and you can put it over there, and you can monitor how you have to give it. So this is if on a basal insulin at the bedtime. So this now we have two effects. One is a Somogai effect and one is a dawn phenomena. So what is a Somogai effect? There was a normal glucose insulin at night. High dose of insulin was given at night. What will happen? There will be hypoglycemia at 2 to 3 p.m. And due to hypoglycemic stress, there will be a glucagon release. And in the morning, आपको क्या मिलेगा? You will find a hyperglycemia. इसमें क्या हुआ? Night time में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ मिडनाइट में, और उसके बाद मॉर्निंग में तुमको हाइपरग्लाइसीमिया मिला। फॉर दिस व्हाट यू विल डू, यू विल रिड्यूस द इंसुलिन डोज एट नाइट टाइम। Other we have a dawn phenomenon. Again, in this you will have a early morning hypoglycemia at 2 to 3 a.m. You see, in this you had a hypoglycemia at 2 to 3 p.m. and in this you have a hyperglycemia at 2 to 3 p.m. and this what you have to do, you have to increase the nighttime insulin. So if on a basal bolus regimen, you have to see this also. Before वाला भी देखना पड़ेगा and bedtime वाला भी देखना पड़ेगा. If on a basal bolus regimen, so you have to see before, that is very important. You can't skip it. So you have to see three regimen if it is on a basal bolus. One is at the bedtime, sugar देख लिया, एक before breakfast देख लिया, एक before lunch देख लिया, और एक before dinner देख लिया. If on a premixed, see before breakfast and see before dinner. Based on the insulin, you will add on the therapy and you will add further. So in the outpatient settings, let's see the outpatient setting. When there is a OHA failure or the blood sugar levels are more than 300 milligram per deciliter with symptoms of hypoglycemia, so start with the glargine 0.1 unit per kg, that is almost 10 unit at 10 p.m. And then you add a regular insulin to these patients. This we have already discussed, so I'm not going to discuss these things. So let me see how you have to start the basal bolus regimen. This is a super ultra slide and बहुत important है, इससे important कुछ नहीं है, and just learn it. Anyhow, you don't have to learn it because इसके पीछे logic आएगा. Logic जहाँ आएगा, we don't have to learn it. So let's see that. So step one, तुमको OHA failure मिल गया, HbA1c is more than 7.5, and you are unable to control the RBS even by giving 3 OHs or more than 3 OHs with the maximum tolerated dose. Stop the OHs and start the patient on insulin. For that, you have to calculate the total daily dose. How you will calculate the total daily dose? The total daily dose से पहले हमें ये याद रखना है, अगर तुम जैपिड दे रहे हो, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलाइसिन, वो 15 मिनट पहले देना है मील के, और रेगुलर 30 मिनट पहले देना है मील के. If you want to see the effect, we usually give regular 15 minutes. That is a wrong practice.
सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल डेली डोज. अगर पेशेंट अंडर वेट है, ओल्डर एज है, पेशेंट इज इन सीकेडी, बिकॉज सीकेडी में भी लो डोज देना पड़ता है, तो यू गिव अ 0.3 यूनिट पर केजी. अगर पेशेंट नॉर्मल वेट का है तो 0.4 यूनिट पर केजी. अगर पेशेंट ओवर वेट है 0.5 यूनिट पर केजी. इफ पेशेंट इज ओबीस, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ऑन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रिमेंबर ऑन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. सीओपीडी में पेशेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में होता है, कोविड में पेशेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे था, तो उसमें 0.6 देना है. But normal weight mates is zero point 0.4. So I am considering a weight of 60 kg. Fine. So 60 kg into 4. It came out to be 24. So total daily dose हो गई 24. Fine. This is for the insulin new patient, insulin naive patients. So मैंने calculate कर ली total daily dose of 24. You got it? How 24 came out? 0.4 divided by 6 came out to be 24. अब मैंने इस 24 को डिवाइड कर दिया 50% बेसल, 50% बोलस. मतलब मैंने इसको 12 यूनिट ग्लार्जिन में ऐड कर दिया, या फिर 6 यूनिट एनपीएच में, एंड 12 यूनिट बचे. अब उस 12 यूनिट को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर. दैट केम आउट टू बी 4, 4 एंड 4. नाउ आई हैव रिटन इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, यू विल गेट. और एक हमने उसमें करेक्शन फैक्टर ऐड करना है. आई विल टेल यू हाउ वी हैव टू ऐड अ करेक्शन फैक्टर. सो दिस इज हाउ यू ऐड अ करेक्शन फैक्टर. इसका भी प्रिंट आउट लेके यू स्टिक इट ऑन योर वर्ड्स. कि अगर मान लो पेशेंट की आपने शुगर चेक करवाई बिफोर ब्रेकफास्ट एंड दैट केम आउट टू बी 140 ना, 140 आ गया. सो लेट्स टेक इट 150 आ गया बिफोर मील. तो मैंने कितनी डोज कैलकुलेट की है? 4. तो 4 में मैं एक और ऐड कर दूंगा. तो बिफोर ब्रेकफास्ट मेरे को 5 यूनिट देने हैं. ठीक है. अब अगेन मैंने करा यूनिट इसका, बिफोर लंच करा, तो दैट केम आउट टू बी 210. 210 आ गया. मैंने देने से 4 यूनिट. मैं और कितने ऐड करूंगा? मैं 4 और ऐड करके पेशेंट को 8 यूनिट दे दूंगा. दे दिया. रात को किया, रात को रह गई 160. ठीक है. तो मैंने देने थे 4 यूनिट. 4 में मैं 3 ऐड करके पेशेंट को 4 + 3 7 दूंगा. आई नो इट इज कंफ्यूजिंग. नेक्स्ट स्लाइड से बहुत अच्छा समझ में आएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So, patient came. He's on the oral hypoglycemic drugs. The maximum tolerated dose. मैंने OHS बंद कर दिया. मैंने टोटल डेली डोज कैलकुलेट करी 24 यूनिट्स आई. मैंने डिवाइड कर दिया, 12 यूनिट लार्जिन के हो गए, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4, 4 एंड 4. ठीक है. अब मैंने आई डिड अ पेशेंट्स insulin before breakfast it was 165, before lunch it was 120, and before dinner it was 124. now i want to Now I want to add the factors to it. So it is 165. So I've added a correction factor of 1. You can see here in this, if it is between 140 to 180, add the correction factor of 1. So I've added a 1, I have added 1 over here. Okay. Now 240i. Now I'll look at this 240. Okay, it is falling in this category. So I've added a 3 units over here. I have added a 3 units over here, and here 124 it is normal 0 unit. So I'll give 5, 7 and 4. Along with that I will give 12 units of basal insulin. Fine. Now in a critically ill patients, what we are going to do. So insulin therapy is initiated when the RBS is more than 180, and we give a DKA regimen. In this we give a IV insulin, fluids, dextrose with the insulin along with potassium. Insulin infusion is preferred in critically ill patient because it is easy to manage. So because it has a very short half-life, and we can go for a frequent blood glucose testing every 30 minutes to 2 hours, and we also give potassium along with it. So this is a DKA regimen. Okay. सो हमने दे दिया पेशेंट को इंसुलिन ओवर द पीरियड ऑफ 24 hours. We know how we give. We add a 50 units to 50 ml NS, and we start with the infusion rate. And if it does not, we calculate it for 1 hour. We give. हमने फिर से करा. If the blood sugar levels haven't come out, haven't reduced less than 10%, we increase the rate to 1.510. मान लो पेशेंट का 10 यूनिट पर 10 ड्रॉप्स पर चल रहा था, एंड हमने दोबारा कैलकुलेट किया. पेशेंट की इनिशियल ग्लूकोज थी 300. हमने करा तो इट शुड हैव फॉलन बाय 10%, मतलब 1 घंटे में 270 आनी चाहिए थी. अगर वो नहीं आई तो मैं 10 ड्रॉप से उसका बढ़ा के 7 ड्रॉप्स इंक्रीज करके आई विल इंक्रीज द ड्रॉप्स इन दोज पेशेंट्स. So after giving insulin for the 24 hours, I will calculate all of the insulin being given in 24 hours. उसका मैं 2/3 निकालूंगा. 2/3 निकाल के उसमें से 50% मैं बोलस दूंगा और 50% बेसल दूंगा. And also I will add a correction factor.
एंड नेवर स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली। जब आपने सबक्यूटेनियस पे उसको शिफ्ट किया, अलॉन्ग विद दैट 2 घंटे उसका इन्फ्यूजन चलने दो। So this is a basal bolus regimen. We have already know what is coming, the future, or I'll call it a present. आजकल what it go, there is a battery operated device that is a continuous subcutaneous insulin infusion pumps, and it is battery operated device, and catheter can be changed every 2 to 3 days. This is a battery operated device. Here's a catheter, and it can be changed every 2 to 3 days. So these are the newer, are not a newer because these are very common these days. It can be connected to the mobiles, and the size is reducing day by day. A sliding scale not used right now. Why? One, it causes a lot of infection. Second, it causes increased mortality and is a prolonged hospital stay. So नहीं use करना है. Let's remember this. Sliding scale को नहीं use करना है. Do not make into practice. लगता easy है, but patient को effect बहुत late आते हैं. So do not try this. Monitor करना है. If it is less than 70, you have to give the patient D25. Okay, and this is a transition. Start subcutaneous insulin at least 1 hour prior to discontinue. We have already discussed this. Okay. Transitions we have already seen. Glargine, why I am discussing glargine, it has to be given. It covers 24 hours. It's a peakless insulin. There will be no hypoglycemia with glargine. Insulin degludec, this it has a half-life of 25 hours and steady state is achieved after 3 to 4 days, duration 42 hours. Adverse effects, hypoglycemia, unawareness, weight gain, and rapid progression of retinopathy. Nowadays, we have Exubera and Afrezza. Exubera has been discontinued because of lung complication. Now we have Afrezza. It is inhaled at the beginning of meal, and it is administered via whistle-sized inhaler called a Dreamboat. And it does not need any refrigerant, unlike the other insulins. It is not recommended for the patient who have diabetes, along with that who have COPD, asthma, and or are being treated by DKO में ये नहीं देना. Now, nowadays, future, let's discuss the future. So what is going to come in future is the uh, oral insulin or a once a weekly insulin, and it will be a breakthrough in the history because patient को subcutaneous की pain खत्म हो जाएगी. So this is a chart and how it is given. If FPS is more than 2250, HbA1c is more than 9.5, weight loss is more than 10%, put the patient on diet, exercise, and OH. If OHA fails, put the patient on the basal insulin and check the HbA1c every 3 months. If patient still doesn't improve, put the patient on basal bolus regimen. So it's a take-home message. There are various types of insulin and insulin analogs we have discussed. Then we discussed about insulin regimens, how you will initiate, how you will monitor, and how you are going to titrate it. And sliding scale should never ever be used. This is the most important slide. कि sliding scale को नहीं use करना है. So I hope this would have helped you. And if you have any doubt, you can discuss with me in the comment section or on Instagram. So thank you.